The figure I look at is death. And death is going up now. Okay, and it's 1,000 a day. If you look at death... Yeah, it's going up again. Let's look. Daily death. Take a look at some of these charts. I'd love to. We're going to look. Let's look. And if you look at death... Yeah, it's started to go up again. One. Well, right here, the United States is lowest in numerous categories. We're lower than the world. Lower than the world? Lower than what is that? Europe. In what? Look. In what? Take a look. Right here. Here's case death. Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Well, much worse than South Korea, Germany, etc. You can't do that. You have Why to go, can't I do that? You have to go by where, look, here is the United States. You have to go by the cases. The cases Why are not dead. as a proportion of when population? We have somebody, what it says is when you have somebody that has, where there's a case, the people that live from those cases. It's surely a relevant statistic to say if the US has X population and X percentage of death of that population versus South Korea. No, because you have to go by the cases. Well, look at South Korea, for example. 51 million population, 300 deaths. It's like, it's crazy compared to... You don't know that. I do. It's on the... don't know that. You think they're faking their statistics? South Korea? I won't get into that because they have a very good relationship with the country. But you don't know that. And they have spikes. Look, here's Germany, low, 9,000. Here's one right here, United States. You take the number of cases. Now look, we're last, meaning we're first. Last? I don't know what we're first in. As a what? Take a look. Again, it's cases. And we have cases... Because of the testing. 1,000 Americans are dying a day, but I understand on cases it's different. No, but you're not reporting it correctly, Jonathan. I think I am, but... If you take a look at this other chart, look, this is our testing, I believe. This is the testing, Yeah, we do more tests. No, wait a minute. Well, don't we get credit for that? And because we do more tests, we have more cases. In other words, we test more, we have... Now take a look. The top one, that's a good thing, not a bad thing. But the top, Jonathan. If hospital rates were going down and deaths were going down, I'd say terrific. You deserve to be praised for testing, but they're all going up. You know, they very rarely talk... 60,000 Americans are in hospital. If you watch the news or read the papers, they usually talk about new cases, new cases, new cases. I'm talking about death. Well, you look at death. Death is way down from where it was. It's 1,000 a day. It was 2,500. It went down to 500. Now it's going up again. Excuse me. Where it was is much higher than where it is right now. It went down and it went up again. But now it's going down again. I'd like to ask you, you started your address by speaking of better times in terms of the economy. From the foreign investors' point of view, and since we are in the era of coalition governments pretty much, would you say that the gloom is lifting also in terms of FDI, foreign investment? What would you like to say to foreign investors who have for the several years been a little skeptical about investing in India? India provides a hospitable environment for foreign direct investment. We will continue to do so. We will continue to improve upon our practices wherever they are needed. मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, मेरी भी दो आँखें हैं, आपकी भी दो आँखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? पहली बात है, मेरी जिंदगी में कुर्सी नाम की चीज़ तो 2001 में आई। 2001 के पहले तो मेरा कोई लेना देना नहीं था राजनीति से, न मैं चुनाव से लड़ने से मेरा कोई लेना देना नहीं था। नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? जी, वो मैं करीब 40-45 साल से करता हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको निभाऊं। कठिन होता है। आपको ये लगता होगा कि एक भागीरथ थे जो गंगा जी लेकर आए, जो दोबारा गंगा जी को साफ कर पाएगा वो आज का भागीरथ ही कहलाएगा। पहले तो मैं एक सामान्य इंसान हूँ, भागीरथ एक बहुत बड़ा, उन्होंने अगर उसको हम माइथोलॉजी से निकाल करके सोचे तो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वर्क किया उन्होंने। उस समय जन सामान्य को जो ज़रूरत थी वो काम उन्होंने किया। मेरी कोशिश है कि गंगा एक सिंबॉलिक है कि हमारे देश में पानी भी एक उत्सव होना चाहिए।
पानी के प्रति जन सामान्य में पुराने सदियों में थे हमारे यहाँ भक्ति थी। धीरे धीरे हमने पानी को H2O बना दिया, दुर्भाग्य वहीं से हो गया। और ये जो लेफ्ट लिबरल का दिमाग फटा हुआ है, उन्होंने अगर ये गंगा को माँ माना होता तो शायद कोई भी व्यक्ति उसको गंदगी करने से 50 बार सोचता। सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी अपने जेब के पैसे से आपने विलासिता, सुख सुविधा की कोई चीज अपने पूरे जीवन में खरीदी है? विलासिता का हर एक का अपना अपना मानदंड होता है जी। अगर कोई कहे कि मोदी जी हिमालय चले गए, तो मोदी जी के लिए वो विलासिता हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। क्योंकि ये जोक नहीं है, ये रियलिटी है। या ये आप समझिए कि ये सच्चाई से निकला हुआ एक ये रियलिटी है जी। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.